we are going live. Sure. Yes, we are live and you are co-host. You can share the screen. Sure. Thank you. I hope this screen is visible to all of you. Again, warm welcome to you. Thank you, Chami, for your introduction. We'll straight away start with the presentation for today. So probably आप में से कुछ लोगों ने ये टीजर्स हमारे या तो व्हाट्सएप पे देखे होंगे या शायद फेसबुक पे देखे होंगे. I will just run through them. So we were doing this campaign with two teasers. पहला ये था कि what will you turn to when fixed deposits और bank fixed deposits are diminishing या फिर banks default कर रहे हैं. आपके पास क्या options available है जब भी डिपॉजिट्स जो फिक्स डिपॉजिट्स है बैंक ऑफर कर रहे हैं उसके रेट्स कम हो रहे हैं और बैंक्स के भी काफी डिफॉल्ट्स हो रहे हैं. सो ये एक टीजर हम लोग रन कर रहे थे और दूसरा टीजर ये था कि इज इट इग्नोरेंस दैट इज कॉजिंग यू 30 to 50% लॉस ऑन द ROI यू आर जनरेटिंग ऑन बैंक एफडीज. बैंक एफडीज में आप पैसा रख के आप अपना नुकसान कर रहे हैं क्या? काफी लोगों को ये पता होता है बट स्टिल दे डोंट एक्ट ऑन इट. प्रॉब्ली आज का वेबिनार उसी के लिए है कि वी आर गोना शेयर सम पॉइंटर्स, सम फैक्ट्स एंड फिगर्स कि आप उस पर एक्ट करें और डिसीजन ले. तो बेसिकली टू टॉक अबाउट फिक्स्ड इनकम, जब भी हम फिक्स्ड इनकम की बात करते हैं दो चीजें हमारे मन में होती है. टू थिंग्स दैट वी वांट टू बी श्योर अबाउट. एक तो अश्योरेंस हो और एक रिटर्न्स हो. वी वांट सिक्योर्ड, वी वांट गारंटीड, वी वांट फिक्स्ड रिटर्न्स. सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज है जो हम देखते हैं कि फिक्स्ड इनकम में हम जब भी इन्वेस्ट करें तो वी नीड क्लियर कट अश्योरेंस एंड फिक्स्ड रिटर्न्स टू बी मेड. टिपिकली these are the options that we invest when we talk about fixed income. Bank FDs primarily, post office, company fixed deposits, LIC भी कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं for getting fixed returns. We have PPF, which is a tax-free return. I hope I'm pretty sure कि आप सब लोग ये इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एक बंदा है जिसने बैंक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट नहीं किया है? If there is somebody, please put a yes in chat box. आप में से कोई है जिसने बैंक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट नहीं किया है? आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जो बैंक डिपॉजिट्स या कंपनी डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट नहीं करता है. Anybody in the room who is not investing in bank deposits? Okay, so the answer is very clear कि सब लोग बैंक डिपॉजिट्स में definitely invest करते हैं. That is the best known option to all of us. हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स से ये डेटा आपके सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली. So this is the statistics of investment of a common man, common Indian, middle class family. कि अगर उसके पास 100 रुपया है तो वो कैसे इन्वेस्ट करता है? How does he invest his savings? So the statistics is very clear कि लगभग 60% goes in deposits, in bank deposits. वो cooperative deposits हो सकते हैं, वो कमर्शियल मतलब प्राइवेट बैंक्स में हो सकते हैं, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हो सकते हैं. बट 60% इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट 100 रुपीज, तो 60 रुपया बैंक डिपॉजिट्स में पैसा जाता है. बाकी 40 रुपीज देन गोज, कुछ पैसा करेंसी मतलब कैश फॉर्म में रहता है, कुछ पैसा लाइफ इंश्योरेंस में जाता है और कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है. बट आउट ऑफ द 100 रुपीज दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड, 60 रुपीज इज इन्वेस्टेड इन बैंक डिपॉजिट्स. और हमारा आज का ये वेबिनार उसी पे बेस्ड है कि वी बिलीव बैंक डिपॉजिट्स इज डेफिनेटली अ लॉस मेकिंग प्रपोजिशन. अगर आप बैंक डिपॉजिट्स में इन्वेस्टेड है तो आप लॉस कर रहे हैं, आप आपका कैपिटल लूज कर रहे हैं. एंड वी जस्ट वांट टू पुट सम फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू कि बैंक डिपॉजिट्स के अलावा हम क्या कर सकते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट वेज, या क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पे हमको सिक्योर्ड रिटर्न भी चाहिए, फिक्स रिटर्न भी चाहिए और
बैंक डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न्स भी मिले. So today we are going to talk about secured bonds, secured debentures, secured government securities, basically G-Secs जिसको बोलते हैं. So secured bonds, I'm sure आप सबको पता है, bonds के बारे में काफी लोगों को पता है. The only problem is people don't take action on it. हालांकि सबको पता है कि बैंक डिपॉजिट्स में पैसा रिटर्न्स कम मिल रहे हैं. सिक्योर्ड बॉन्ड्स में वी डेफिनेटली हैव बेटर रिटर्न्स, जो मैं डेटा आपके साथ आगे शेयर करूंगा. द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट टेक एक्शन ऑन इट. और वहीं पे आज ये चार्ट या ये स्टैटिस्टिक्स हमको बता रहा है कि स्टिल 60% ऑफ द मनी दैट यू हैव इज इन बैंक डिपॉजिट्स. Okay, now I'll just share a few parameters vis-a-vis bonds, secured bonds and fixed deposits, and let you know कि how bonds are much superior or much better than fixed deposits. ये कुछ 6-7 parameters पे हमने study किया है, which I want to share with you. So I'll talk about the first parameter, liquidity. Fixed deposits are liquid definitely, and so are bonds. जिस secured bonds की हम बात कर रहे हैं, basically they all are tradable bonds. और आपको अगर चाहिए तो आप उनको रिडीम कर सकते हैं, आप मार्केट में उसको बेच सकते हैं. Whenever we ask you to buy bonds, हम we try to ensure कि आप आपके गोल के साथ उसको मैप करें, और इमरजेंसी के केस में डेफिनेटली यू कैन लिक्विडेट इट. सो दे आर एज लिक्विड एज फिक्स्ड डिपॉजिट. सो हियर आई वुड से डिपॉजिट्स एंड बॉन्ड्स आर ऑन एट पार. टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो अगेन, whatever interest is earned on fixed deposits and the interest on bonds, they are taxable as per your slab. So आपका जो भी tax bracket में आप बैठे हैं उस हिसाब से bonds and fixed deposits are taxed. Interest, when we talk about interest, we are speaking about types, मतलब interest payout types क्या क्या है. So basically bonds में भी monthly options available है interest के, quarterly options available है, cumulative options available है, yearly options available है. So again, it is on par with fixed deposits. In all these three parameters, bank deposits और bonds, secured bonds जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, they are faring at par. Now let's talk about the next aspect, जो है safety. This is a very important aspect, and I am sure आपको ये पता ही होगा, लेकिन काफी लोग जानते हुए भी क्यों अनजान बनते हैं या उस पर एक्ट नहीं करते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है. When we talk about fixed deposits, they are unsecured. Fixed deposits बैंक में जो आप करते हैं वो unsecured होते हैं नेचर में. There is no security on it. Typically आप इन्वेस्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट्स में looking at the brand or the bank you know. जैसे SBI में आपने इन्वेस्ट किया, you trust SBI blindly, you put a FD in there. Either you go through your known sources और आप बैंक में डिपॉजिट्स करते हैं, या आप वो बैंक का नाम सुन के आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं. But typically it is an unsecured loan given to a bank. If you check the balance sheets of bank, you will see it is categorized as unsecured loan. सिर्फ आरबीआई ने वो प्रोविजन की है 5 लाख इंश्योरेंस की, जहां पे आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया गया है इन केस दैट बैंक गोज डिफंक्ट. तो 5 लाख का इंश्योरेंस देते हैं अगर वो बैंक डिफंक्ट जाती है, लेकिन पर से इट इज अ अनसिक्योर्ड लोन टू बैंक. काफी लोगों को ये पता होगा, बट आई स्टिल वांट टू स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट. वेयर एज सिक्योर्ड बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, the bonds are secured by nature. There is a collateral security. There is an asset that is backing the bond. और definitely अगर कुछ भी वो कंपनी को होता है तो वो सिक्योरिटी बेच के आपके पैसे आपको मिल जाते हैं. So when we talk about secured bonds, you definitely get your money back is what we want to tell you. Next important point, TDS. बैंक डिपॉजिट्स में अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 10,000 से ऊपर है तो 10% TDS डिडक्शन होता है. बट इन केस ऑफ बॉन्ड्स देयर इज नो TDS डिडक्शन. जो भी पैसा है पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है. इट इज कंप्लीटली ऑन यू टू डिक्लेयर इट इन योर इनकम एंड पे टैक्स ऑन इट. तो TDS डिडक्ट नहीं होता है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलता है एंड देन यू पे टैक्स ऑन इट. थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्रेडिट रेटिंग. आज जब भी आप बैंक डिपॉजिट्स करते हैं, देयर इज नो थर्ड पार्टी एजेंसी विच इज एंडोर्सिंग इट. वी ओनली ट्रस्ट दैट बैंक, वी ओनली ट्रस्ट द पीपल हु हैव टोल्ड अस टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर बैंक, और हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं. बट इन केस ऑफ सिक्योर्ड बॉन्ड्स देयर आर थर्ड पार्टी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जैसे क्रिसिल है, केयर है,
जो एंडोर्स करते हैं, जो रेटिंग देते हैं वो बॉन्ड्स को, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन मेक अ डिसीजन। डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आप क्रेडिट रेटिंग देख के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, बट इट इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर और पैरामीटर अपार्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट और द कॉर्पोरेट। आप देखें, उसके अलावा आप क्रेडिट रेटिंग का भी को देखें, तो देन इट एड्स अप। इट इज डेफिनेटली वन नॉच higher or one notch superior to fixed deposits, I would say. So in terms of safety, in terms of credit rating, in terms of no TDS deduction, bonds are definitely better than fixed deposits. Returns की हम बात करें तो hands down bonds, secured bonds are giving much better returns. As I told you, हमने एक teaser जो आपसे share किया था, bonds, secured bonds are giving returns in excess of 30 to 50% more than bank FDs today. आज मैं आपसे एक इलस्ट्रेशन आगे शेयर करूंगा जहां पे वी विल शो यू कि बॉन्ड्स 30 to 50% ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं आपको दैन अ बैंक एफडी। सो अगर हम 6-7 पैरामीटर्स देखें तो आई एम श्योर यू आर कन्विंस्ड कि बॉन्ड्स आर मच बेटर टू इन्वेस्ट। फिक्स डिपॉजिट्स के सामने सिक्योर्ड बॉन्ड्स इज डेफिनेटली वन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसको आपको देखना चाहिए। And I'll just share you one illustration for better knowledge कि इंटरेस्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ, जो रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ, सो यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है और आप उसे इन्वेस्ट करते हैं से फॉर अ शॉर्ट टर्म टेन्योर ऑफ 1 ईयर, मीडियम टर्म टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स और अ लॉन्ग टर्म टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स, एफडीज के आज जो रेट है बैंक एफडीज के, दे आर एनीवेयर रेंजिंग इन द रेट ऑफ 4-4.5% टू मैक्सिमम 6-6.5%। लेकिन अगर हम बॉन्ड्स की बात करें, हमने कंजर्वेटिवली AA या ट्रिपल रेटेड बॉन्ड्स का ही रिटर्न्स यहाँ पे पकड़ा है, तो दे आर एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 6% to 9%। शॉर्ट टर्म में बॉन्ड्स आर गिविंग यू 6% रिटर्न्स, आई एम टॉकिंग अबाउट AA रेटेड बॉन्ड्स, एंड लॉन्ग टर्म में अगर 10 साल का आपका होराइजन है तो 9% या 10% तक भी आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। So if you look at the duration and the difference in returns from 30% to 50% returns, excessive returns या additional returns you get in bonds. So ये बहुत clear है कि bonds में आप definitely ज्यादा secured भी है, safe भी है और returns भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। Now the only question is कि why are not people investing in bonds? जबकि लोगों को पता है ये डेटा ओपन डोमेन में है, फिर भी लोग क्यों नहीं करते? तो जब हमने हमारे क्लाइंट से बात की, व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन बॉन्ड्स, हम पिछले 3 साल से फिक्स्ड इनकम पे काम कर रहे हैं, तो ओनली रीजन वी कुड अंडरस्टैंड इज कि लोगों को पता है, लेकिन आगे कैसे बढ़े या एग्जीक्यूशन कैसे करे, इसके बारे में पीपल आर अ बिट कंफ्यूज कि इसको आगे कैसे लेके जाए। पता है बॉन्ड्स अच्छे हैं, बैंक एफडीज तो बहुत सिंपल है, या तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन एफडी खोल दो या बैंक में जाओ, चेक भर के आपको एक एफडी रिसीट मिल जाता है। इन बॉन्ड्स के बारे में हाउ टू डू इट, प्रोबेबली व्हाट वाज वन फैक्टर व्हिच वी फाउंड कि लोगों को वो इशू है, एंड दैट इज व्हाट दिस वेबिनार इज ऑल अबाउट। जस्ट टू फिगर्स टू शेयर विथ यू, जस्ट सम डेटा जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। एनी गेसेस कि ये क्या हो सकता है कि आप में से कोई इसके बारे में कुछ बात कर सकता है कि वी आर जस्ट शोन 2 फिगर्स, 117 trillion US dollars and 330 trillion US dollars. Anybody can take any guess on this कि ये फिगर्स क्या हो सकते हैं? Okay, Samir. So I think you are probably one person who are investing in bonds. So I'll just elaborate it for people who are not aware about this. Today, the global equity market, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हम बोलते हैं, ग्लोबल इक्विटी मार्केट इज 117 ट्रिलियन US डॉलर्स। और अगर हम फिक्स्ड इनकम या डेट मार्केट ग्लोबल देखें तो दैट इज 330 ट्रिलियन US डॉलर। तो ग्लोबली बॉन्ड मार्केट या फिक्स्ड इनकम मार्केट बहुत बड़ा है, इट इज मच बिगर देन द इक्विटी मार्केट। प्रोबेबली सम ऑफ यू मस्ट बी फेसिंग द पेन ऑफ इक्विटी टुडे। आज मार्केट्स साइडवेज है, वॉलेटाइल है, बेरिश मोड में है, बट पीपल आर ग्लोबली अगर आप देखें तो पीपल आर डेफिनेटली मूविंग टू बॉन्ड मार्केट्स। वो बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया में हालांकि द सिचुएशन इज अ लिटिल रिवर्स, हमारा इक्विटी मार्केट बड़ा है और बॉन्ड मार्केट
70% है. सो इक्विटी मार्केट अगर $3 ट्रिलियन है तो बॉन्ड मार्केट हमारा आज $2 ट्रिलियन ही है. बट विद द रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बॉन्ड मार्केट में बढ़ रहा है, डेफिनेटली the liquidity is improving and more people are now investing in bonds. So India में भी ये market बढ़ रहा है. आज की डेट में, so probably 5 years down from today, only HNIs, ultra HNIs, I would say financial institutions या mutual fund companies, insurance companies, ये ही सिर्फ invest करते थे bond markets में. But thanks to RBI, thanks to SEBI, now the bond markets are opened for retail people also. और आज मैं और आप जैसे लोग bonds में invest कर सकते हैं. So that market is definitely growing and I'm pretty sure in the next 5 years हमारा भी bond market equity market से बहुत बड़ा होगा. So this is just to give you a glimpse कि how are we placed vis-a-vis global scenario. So जैसे कि मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द पीपल या जो भी हमने सर्वे किया उससे हमको यही पता चला कि लोग आगे आके इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं. सो द मेन प्रॉब्लम वाज कि एग्जीक्यूशन कैसे करे, वो लोगों को दिक्कत आ रही थी. दैट इज वेयर वी इंट्रोड्यूस्ड एमफिना, दैट इज मनी मैटर्स फिक्स्ड इनकम एडवाइजरी डेस्क. We have introduced this in just 2 months back, और we definitely want to bring awareness. हमारा मिशन ही यही है कि हम 1 लाख लोगों को एफडी मुक्त कराना चाहते हैं. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एफडीज में आपका पैसा नहीं होना चाहिए. डेफिनेटली इमरजेंसी फंड्स टू सर्टेन एक्सटेंट शुड बी इन बैंक एफडीज, बट हम चाहते हैं कि जो पैसा फॉर नो रीजन एफडी में आपने रखा है क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 2 साल में, 3 साल में या प्रॉब्ली 6 महीने में लगने वाला है, एंड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू इन्वेस्ट, आपने एफडी में रखा है, वो पैसा आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें और अच्छे रिटर्न्स उसमें से जनरेट करें. सो मनी मैटर्स फिक्स्ड इनकम एडवाइजरी डेस्क हमने इंट्रोड्यूस किया फॉर द सेम रीजन. Some of the features basically are we provide advisory, we help you to generate 30 to 50% more returns than your bank FDs. जैसे मैंने कहा कि bonds में you have multiple options. You have options from 30 days, अब 30 दिन से लेके 40 years तक के investments option है. तो you have to pick and choose. आपके गोल के हिसाब से आपको बताना है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करना है. आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हम आपको कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस दे सकते हैं, एंड दिस एडवाइजरी सर्विस इज बेसिकली फॉर दैट. बॉन्ड्स विल बी बॉट इन योर अकाउंट. आपके अकाउंट में वो बॉन्ड्स ट्रांसफर किए जाएंगे आपके डीमैट में. सो यू विल बी होल्डिंग दोज बॉन्ड्स. वी विल बी हैंड होल्डिंग यू इन द एंटायर प्रोसेस, राइट फ्रॉम बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स सिलेक्ट करने हैं, कौन से बॉन्ड्स बाय करने हैं, और वो बॉन्ड्स आपके अकाउंट में आने तक एंटायर प्रोसेस we will help you in that. And surely our team will be more than happy to help you with the offerings which we have. So as I said, हम लोग AAA rated या AA rated bonds में ही deal करते हैं. Typically government guaranteed bonds या perpetual bank bonds, G-Secs. Based on your requirement, we help you in these bonds. अगर आपका रिस्क एपेटाइट है, अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो श्योरली आप हायर रिस्क हायर रिटर्न बॉन्ड्स में भी जा सकते हैं. बट इनिशियली वी वुड सजेस्ट, अगर आपने कभी भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं किया, देन यू शुड स्टार्ट विथ AAA और AA रेटेड और गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स. ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा. जो भी लोग आज एमफिना सर्विस को जिसने सब्सक्राइब किया है, ब्रिटानिया का हमारे पास शॉर्ट टर्म बॉन्ड था, जस्ट 70 डेज 80 डेज का बॉन्ड था, और काफी रिक्वायरमेंट्स हमको आती है कि जिनको 2 महीने में पैसा अकाउंट में पड़ा है, 2 या 3 महीने के बाद पैसा लगने वाला है, और बैंक आइदर वो सेविंग अकाउंट में ऐसे ही पड़ा है या शॉर्ट टर्म एफडी में है जहां पे आपको 2% या 3% सिर्फ मिल रहा है. तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स पे काफी हमको इंक्वायरीज आ रही है, और हमने ये ब्रिटानिया का बॉन्ड जस्ट 2 हफ्ते पहले लोगों को ऑफर किया था, विच वॉज गिविंग अ यील्ड ऑफ 6.5%. और बेसिकली जब भी कोई अच्छा बॉन्ड हमारे रिसर्च टीम को अवेलेबल होता है, तो हम उसको एमफिना पे सब्सक्राइबर्स को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, एंड विद इन नो टाइम लोग उसको सब्सक्राइब, मतलब दे टेल अस दैट वी वांट टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड, और वो सब्सक्राइब हो जाता है या बॉन्ड्स बाय हो जाते हैं. सो
now Britannia bond is no more available with this at this yield price, but 6.5% पे 3 months का ये bond available था, and within a day I feel वो सब पूरा bond हमने बेच दिया था. We had sold it to our clients. Few current offerings जो मैं आपसे share करना चाहता हूँ. We have a Rajasthan government guaranteed bond right now available with us, जो 6 साल का जिसकी maturity है. It is a government guaranteed bond, so nothing much to say about it. 10% उसका yield है अगर आप calculate करें. उसका maturity पे आपको 5 लाख रुपया मिलेगा, and the price that you pay right now is 3 लाख. 3,02,000 is what you pay right now for it. और 6 साल के बाद 2028 में आपको 5 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. So a very good offering for a 6-year product. अगर आप बैंक एफडी सिमिलर टेन्योर की देखें तो मुझे नहीं लगता 6% या 6.5% के ऊपर आपको रिटर्न इसमें मिलेगा. Another offering that we have है जो है इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस का, जो लगभग 2-2.5 साल में जिसकी मैच्योरिटी है. अगेन AA rated by CRISIL and secured bond, जो अभी लगभग 9.25 से 9.5% का yield आपको मिल रहा है. You can invest as low as 50,000 and maximum जो भी amount आप कर सकते हैं. तो ये 1 लाख से लेके whatever amount you want to invest you can put it. 50,000 भी आप इसमें invest कर सकते हैं. And this is a, I would say, a short term offering from our end. So why money matters? As मैंने already have briefed you on this कि we have an in-house research team. A basic idea is कि आप fixed deposits, which we definitely believe is a loss-making proposition. आप आपका capital उसमें burn कर रहे हैं because आज की date में inflation is at 7-8% और आप अगर आज 5% या 6% earn कर रहे हैं तो you are burning your capital. So at least be on par with the inflation rate जो bonds में आप कर सकते हैं. So our research team will help you once you are part of the MFINA subscription group. आपको different opportunities offerings दिए जाएंगे and you can shift your money from bank fixed deposits to the bonds. So proactively managed, you can tell us whatever ticket size you have, what tenure you're wanting to invest, आपको उसके returns कैसे चाहिए. Our team will send you the offerings whatever we have and help you in the entire process. बहुत बार ये होता है कि bonds buy करना तो बहुत easy हो जाता है. So we have assistance probably online platforms है कि आपने buy कर लिया, लेकिन selling के time there is no assistance. So that is what one of the USP of Money Matters. We will help you even selling the bonds. अगर आप मैच्योरिटी तक उस बॉन्ड्स को रखते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई उसका इशू नहीं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, यू वांट टू सेल द बॉन्ड्स, so we help you selling the bonds because we have a pool of clients. हमारे ही किसी clients को हम उसको बेचने में help कर सकते हैं, या definitely we help you in selling in the exchanges. So आप exchange पे जाके भी उसको बेच सकते हैं. So that is one USP I would definitely like to tell you about. पिछले 2 साल में we have transacted more than 100 crores in bond markets and अभी हालांकि हम भी सिर्फ ये HNI clients के लिए ही bonds का पहले करते थे. Now we have opened up this service for retail clients also, where we felt कि in spite of knowing the fact कि जैसे मैंने बोला कि secured bonds के बारे में पता है, but people don't take that first baby step probably. करना है और कैसे करना है. So that is where MFINA service हमने introduce किया है. We are charging a very small fee of one-time fee to subscribe to this service, 1499. This is a one-time charge. Once you are subscribed to this service, we start sending you whatever offerings we have, or then you can, in fact, and you can also come and tell us कि आपका क्या requirement है, उस हिसाब से भी हम आपको customized solutions भेज सकते हैं. Dinkar sir, I'll take your question after the presentation. Just for today, for the next 20 minutes, all those people who are with us in this webinar, for the next 20 minutes, we have this one-time offer of 499. Charmi, I will request you to share the form, the Google form for registration. अगर आप अगले 20 minutes में register करते हैं और 499 rupees pay करके subscribe करते हैं, so you will be our lifetime member and we will help you in the process of
getting secured bonds and offer our advisory service to you. So this is for the next 20 minutes. I'll just share with you the Google form. Charmi, can you share the Google form in the chat box? I have shared the yes, Sure. yes. I have Okay. shared the link in Sure. the chat. Okay. So I hope this is, आप अगर वो Google फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो this is the registration link that you would see. आपको आपके basic details fill in करने हैं और फॉर्म को सबमिट करना है. Once you submit the form, you will get a mail from our side. So this is the MFINA registration mail that you will get. आपको 1499 नहीं भरना है. You just have to pay 499 rupees using the QR code or by UPI, whatever is comfortable to you, or you will be subscribed to our service. Once you are part, you will be part of our MFINA group, and then we'll start sending you the offerings that we have. So I hope आपके हमने 20 minutes ही आपसे लिए and we could add value to you. My sincere request to all of you कि secured bonds को definitely आप try कीजिए. It is one fixed income product which should be a part of your portfolio. At Money Matters, जैसे चार्मी ने brief किया, we are also into equity, we are also into fixed income, but diversification is definitely needed. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 100% equity में हो या 100% आप fixed income में हो. तो अगर आप शॉर्ट टर्म होराइजन में पैसा पार्क करना चाहते हो, वी ऑलवेज से एट मनी मैटर्स, इफ यू हैव अ टेन्योर ऑफ 5 years एंड मोर, आप इक्विटी ऑफरिंग्स को देखिए. लेकिन आप 2 साल 3 साल 1 year और बिलो 5 years, देन फिक्स इनकम ऑफरिंग्स को आपको देखना चाहिए एंड कीप योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड. आपका पैसा सिर्फ इक्विटी में भी मत रखिए और सिर्फ फिक्स इनकम में भी मत रखिए, बिकॉज you need to be don't put all your eggs in one basket is what we always say. And I think we are open to questions now. आपके अगर कोई भी सवाल हो with respect to this webinar या secured bonds, I'll be more than happy to take this. I'll just share our numbers with you. हमारी टीम आपको ये प्रेजेंटेशन, ये वेबिनार होने के बाद डेफिनेटली कॉल करेंगे. आपके कुछ भी डाउट्स है तो आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस. Sir, we have few questions in chat box. Sure. Okay. Samir Karve is asking charges for service and do I need to open demat account with you? Okay. So basically whatever yields we give you, आपको एक वन टाइम चार्ज भरना है 499 अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं. वी प्रोवाइड यू नेट यील्ड्स, तो आपको अलग से हमको अगर कुछ भी पे नहीं करना है. वॉट एवर यील्ड्स वी प्रोवाइड, दे आर नेट यील्ड्स एंड देयर इज नो अदर चार्जेस दैट यू नीड टू पे अस. सो इट इज ओनली द वन टाइम फी दैट वी टेक फ्रॉम यू. डू यू नीड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट? तो आपका कहीं पे भी डीमैट अकाउंट हो सकता है, दैट इज फाइन विथ अस. यू डोंट नीड टू ओपन अ डीमैट विथ मनी मैटर्स. wherever you have a demat account, definitely a demat account is necessary. आप कहीं पे भी खोल सकते हैं and we'll ensure that the bonds are transferred to your demat account. So anywhere the demat account is necessary. Okay. Next question. So what about your thoughts on Yes Bank or Franklin Asian Park? Okay. So as I said कि definitely bank, Yes Bank है, financial institutions है, DHFL है. There have been issues with banks and financial institutions. लेकिन you need to consider AA या AAA rated bond. जैसे मैंने कहा, you need to consider the management, you need to consider the company. Yes Bank का issue ये था कि unsecured loans था. आपने एफडी अगर उसमें की थी तो इट वाज अनसिक्योर्ड, जहां पे आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा था. सो डेफिनेटली आई वुड से कि उससे ऊपर इमरजेंसी फंड्स आपका नहीं होता है तो आप वो पैसा बॉन्ड्स में पार्क कीजिए. फ्रैंकलिन में जो इशू हुआ, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, सो इट वाज अ डेट फंड. इफ यू आर अवेयर, डेट फंड में जिसमें भी उन्होंने AA या AAA रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, उन सभी लोगों को उनका पैसा मिल गया है.
The problem was they took higher risk. उन्होंने छोटे कंपनीज में, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को भी के बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया जिसका रेटिंग अच्छा नहीं था, या जो नए थे आई वुड से, जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था और जिसमें उनको इश्यूज आया है. So that is why I am telling you, you should put your investments in AA or AAA rated secured bonds. अब unsecured पार्ट में अगर जाओगे तो डेफिनेटली ये इश्यूज हो सकते हैं. बट फ्रैंकलिन के केस में जो भी डेट फंड्स उनके थे, जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स में थे या AA AAA रेटेड कंपनीज में थे, वो पैसा उनको, उन लोगों को पूरा मिल चुका है. So Okay. Manish Dehiya is asking, can you demonstrate the Amphenna app? ओके, तो मनीष सर, देयर इज नो ऐप पर से. अभी तक हमने कोई ऐप डेवलप नहीं किया है. देयर इज अ गूगल फॉर्म, एज आई शेयर, चार्मी हैज शेयर्ड द लिंक. आपको सिर्फ वो फॉर्म भरना है. वंस यू फिल इन द फॉर्म एंड पे द सब्सक्रिप्शन चार्जेस, आपको, यू विल बी एडेड टू अ ग्रुप. समवन फ्रॉम आवर टीम विल कांटेक्ट यू. आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको बॉन्ड ऑफरिंग्स भेजा जाएगा. डेफिनेटली, सिंस यू विल बी पार्ट ऑफ एम्फिना ग्रुप, व्हाटएवर offerings, best offerings we have with us, we'll send you the details, or if it fits in your आपके गोल से के साथ अगर वो मैच करता है, if it fits in your bill, then you can come back to us and we'll help you with buying those bonds. Thank you, Sumit. You have paid the confirmation. After this presentation is over, you'll get the confirmation from our team, and someone from our team will call you. Manish sir is asking, so how do you invest manually? So I'll just explain you the process. मैंने आपको जब भी bonds का मैं details आपको भेजता हूँ and you send us a confirmation कि आपको ये bond buy करना है, we'll share the bank details. हमारे company के bank details आपके साथ share करते हैं. On your confirmation, you have to transfer that money to us, and in T+3 days. तो आपने आज अगर पैसा ट्रांसफर किया तो 3 दिन के अंदर वो बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट में होगा. सो वंस यू ट्रांसफर द मनी टू अस एंड शेयर योर डीमैट डिटेल्स विद अस, T+3 डेज में वो बॉन्ड्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे सर. सो इट इज टिपिकली ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन. Those who have subscribed, please put OK in the chat box, so our team will call you after the presentation to ask about details. I'll be more than, thank you Bhupender, thank you for subscribing with us. Thank you Manish sir. कोई भी आपके सवाल हो, so probably bonds is just one. We want to make this very simple and crisp and clear. There are multiple options bonds में. अभी covered bonds काफी चर्चा में है, या there MLD जैसे market link debentures options available है. But first stage, baby step is getting into the AA or AAA rated bonds. Then once you understand simple, आप ये options में एक बार invest करना सीख जाओ और समझ जाओ, then we can go to the MLDs or talk about the secured bonds या covered bonds जिसके बारे में बात करता, जहाँ पे थोड़ा risk higher होता है लेकिन returns भी higher होते हैं. So first let us go to the graduation level, and then we can go to the post graduation level. तो बॉन्ड्स में भी बहुत सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं जैसे मैंने कहा, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन डिस्कस अबाउट दैट इन 1-to-1 मीटिंग्स. तुषार सर, श्योरली हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे. चार्मी, इंश्योर दैट वी सेंड द रिकॉर्डिंग. नितिन सावंत हैज सब्सक्राइब्ड, थैंक यू सो मच. या एनी मोर क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट सिक्योर्ड बॉन्ड्स? आई होप वी कुड ऐड some information with you, we could add some, share some knowledge with you. As I said कि don't be in the FD loss making proposition. I sincerely feel आपका इमरजेंसी फंड थोड़ा बहुत बैंक FDs में रखिए, लेकिन सिक्योर्ड बॉन्ड्स के ऑप्शंस अवेलेबल है 1 महीने से लेके 1 साल 40 इयर्स तक ऑप्शंस अवेलेबल है. Please do start some investments in bond. Take flavor of this product. Fixed income में आपका पैसा होना जरूरी है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट से पैसा ये निकाल के आप सिक्योर्ड बॉन्ड्स में स्टार्ट इन्वेस्टिंग. टेक अ फ्लेवर ऑफ दिस प्रोडक्ट, यू विल मेक मच मोर मनी. आपको प्रॉबली आज की डेट में ये रिटर्न मतलब
कुछ लोगों का कहना था, व्हेन आई टॉक टू फ्यू क्लाइंट्स, सर यहाँ पे मुझे 5% मिल रहा है, आपके बॉन्ड में मुझे 6% ही मिल रहा है, बट इवन दैट 1% रिटर्न इन अ लॉन्गर होराइजन, इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये 1% का रिटर्न आप क्यूमुलेटिवली अगर अगले 5 साल या 10 साल आपका बॉन्ड का एयूएम या फिक्स इनकम का एयूएम आप बढ़ाते हैं, तो दैट 1% विल ऑल्सो एड मच वैल्यू टू यू, एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज it is 20% more. So 5% के ऊपर अगर percentage terms में देखें तो 20% more returns is what you will get in bonds. So but I will ensure you कि आपको हम जो भी bond suggest करेंगे, secured bond suggest करेंगे, वहाँ उसमें आप minimum 30% से maximum 60% returns, higher returns than the bank FDs is what you will make. So please do look into this aspect of fixed income. And it is our sincere request that MFINA आप करें तो we will definitely guide you, but if you want to Google it or do it by yourself, you can Google it by yourself and do it. जिन लोगों को advice की जरूरत है, because bond markets में आज बहुत सारे bonds available, people get confused कि कौन सा bond buy करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. That is where as Money Matters or as MFINA team, we come into picture, and apart from the advisory part, we help you in the service aspect also. So I think there are no more questions from your end. Our team will call you once this session ends. Should I take this session off? So